की जरूरत है? प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना लंबा उन्होंने तारुफ करा दिया. अब I'll hope that I live up to the pitch or the context that is provided by Professor Aziz. तो बेसिकली रेको डिक नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना होगा? जगह के लिहाज से नाम सुना होगा या? So what I'll do today is I'll try to make it interactive. I will not make it like unilateral kind of lecturing kind of thing. So I'll ask questions if that is okay. Yeah. Not to test you guys' knowledge, but to kind of interact with you guys, to see how aware you are of what is going on in your country, right, like 10 miles away, 10, 15 miles, Supreme Court, however, less than 10 kilometers away, what is going on, how aware you are, and what can you do to be more aware of what you should know. So my objective will be partly to inform you guys on what is going on, what I know is going on, and also to know from you guys what you think is going on. So Reko Diq, I saw majority of the hands going up. Who wants to tell me about Reko Diq the way they know it? Yeah, go on. Yeah, Reko Diq. As for my information, as I'm from Balochistan, Reko Diq is an area of gold reserves, Reko Diq MORE, which is a silver reserves. So Reko Diq का एक मसला मतलब ये बना था और बलूचिस्तान से तमाम लोग ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग यही फील करते थे कि Reko Diq से सोना निकाला जा रहा है और एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जो चाइना के साथ हुई है, लेकिन उसके जो अल्टीमेट रिटर्न्स है वो बलूचिस्तान के जो लोग हैं रेजिडेंट्स हैं उनको नहीं मिल रहा. That's all I know. That's very good to know. What's your name? Inam Tariq. Inam. Inam, you put it in a very good way. Exactly the way I wanted all of you guys to understand it. So, the first objective, what is going on in Reko Diq? First of all, it is part of the territory of Pakistan. Secondly, it is part of the territory of the province of Balochistan. And what is there? There are reserves of copper and gold. And who should own those reserves? They are owned by? Local residents. They are owned by the citizens. They are the assets, resources of Balochistan. They are owned by you. You are the owner of them, all right? All of us are because it is part of the federation. But when you said that the people of Balochistan will benefit from it, that is the ultimate objective of any foreign investment. So guys, what happens when a foreign company comes to a country like Pakistan? We need to be very, very careful of making any views about this. There is law. We all know there is international law. We all know that there is law of Pakistan. Yeah? So what happens when the government of Pakistan knows that there is oil, for example, there is oil somewhere, there is gas somewhere. These are the major natural resources that we are now aware of. Although there are a lot of different types of natural resources. Copper, gold, there are some parts in Balochistan, including Reko Diq, which are rich in that kind of resources. But unfortunately, the government of Pakistan has no resources to extract them. Or they may have resources, but they don't have the technical know-how. So they need technical expertise. And in order to get the technical expertise, they need to bring people from abroad, of course, who have done this for years, who have expertise to do it. And you're not talking about small amount of resources here.
You are talking about the commercial production. And an estimate of Reko Diq's copper resources is that if we are, Pakistanis, if we are able to fully benefit from the Reko Diq's copper resources, we can become a country like Switzerland. It is that valuable of a resource. But do we have the expertise to do it? Do we have the capacity to benefit from it the way we should? Yeah? अगर आप आज से 50 साल पहले की सऊदी अरेबिया की पिक्चर्स देखें, हज की तस्वीरें लोग शेयर करते हैं, बाज़ का लोगों ने पुरानी तस्वीरें देखी, आप वहाँ पे 70 साल पहले की तस्वीरें देखें और आज की तस्वीरें देखें. That miracle happened. How that happened? Because of the oil. Yeah? But of course because of the blessing of God, but because of oil mainly. So how that happened is in those 30-40 years, the government there, they were able to utilize that resource for the benefit of the country. How they did it is a different story. I'm not going to go into that. But are we able to do it? If we discover something, rise up. If we discover a big resource of whatever, precious metal in Pakistan, do we have the ability to put it or use it as a vehicle for not only our economic development, but also for the development of our people, for our own development, for the development of our educational institutions, for our health services, which are necessities for every society? Yeah? So when we talk about for the benefit of people, Inam put it very well. So when we talk about for the benefit of the people, these are the benefits we are talking about. Not only the economic well-being of the country at large, but also the social, educational, or whatever way society can be improved of the people where those natural resources are discovered. Now let me get back to the Reko Diq project. So what happened in somewhere in 1990s, or maybe even earlier than that, scientists made some experiments. I don't know how they discovered it, I'm not a scientist. So scientists discovered that there could be something here. But as we know that we are behind in everything, we are behind in science as well. We didn't know how to really find out if we have something here. So we brought experts from outside. And they came and they started digging things, starting doing experiments with the soil there. And I'll cut the story short. And by the 1990s, early 1990s, they already knew, they already knew how many years have passed already. You can say how many years we have wasted already. In 30-40 years, we could have already become half of us Switzerland, isn't it? So in 1990s, they had already discovered that there is a huge amount of copper and gold here. But what those foreign companies and foreign experts, they do, they tell you half truth sometimes. Sometimes they tell you full truth. But if you're not able to or willing to listen to the full truth, they will not tell you. Why will they tell you? Why will they tell you? They have no vested interest in it. And if you don't know what you have, nobody will tell you what you have. It is your asset, you are responsible for it. So let's kind of jump quickly into the phenomena today. In 1990s, it was almost sure that there are big resources there, there is big chunk of copper there. And if we can exploit it, if we can extract it commercially, if we can sell it commercially, we will make big money of it. And when there is money, we Pakistanis, humare kaan khade hain. Money is very dear to us, isn't it? We love money. Yeah? Who loves money? Everybody. We all love money, isn't it? So we need money, of course, but we don't need as much as we love it. So when we love money that much and we are powerful,
in whatever capacity we can exercise our power, we become a little bit more greedy as well, isn't it? We want to fill our own pockets. And this is exactly what happened. In 1993, a contract was given to Tathyan Company. Tathyan Company was registered in Pakistan. Originally, the company was found in Australia. And it was registered as a subsidiary in Pakistan, and it was given a contract by the government of Balochistan, and of course under the influence and with the consent of the government of the federal government, to discover, commercially discover resources, make drawings how to extract them. And they started working on it, and by the end of 2000, by the end of last century, they already knew that this is how we are going to extract this. So already they had the drawings. So I'm not a technical expert, but if you take a look at the case which is pending in the Supreme Court, it is in public domain. You will see that they have presented about 300-400 pages long technical report. And that technical report includes all the drawings, like where the copper is, how are we going to build a mine here, how are we going to extract it. So that is the part of their deal that they had with the government of Pakistan. So they spent about 10 years, from 1993 to 2003, to make all those drawings. And because it is, I don't know if it was supposed to take that long, but it took that long. And in 2003, the government of Pakistan decided not to give them a contract to commercially exploit. Yeah. So they were working on it for ages, 10, 15 years already. Before the contract, they must have sent experts, they must have been sitting there for ages, they must have brought equipment. So I don't know how much of an investment is required to figure out this much of and to make those drawings and technical reports and stuff like that. So I suppose they invested a lot of money and resources in doing all that. But in 2003, because there was a new government, there was a change of heart, change of mind, the government decided to not award them a contract to commercially exploit, to extract copper from it, and give the contract to a Chinese company. And of course, they didn't like it. Nobody would, yeah? Nobody would. If you have a ripe mango, you want to eat it, isn't it? You don't want to give it to your neighbors. So they wanted to eat it as well, and but the government just didn't let them eat it. And they used everything in their power, in their capacity, to get that contract back. And you know what? We are stupid. We are not stupid today. We are stupid from the very beginning. So we have signed those treaties. You know treaties? Yes. So we have signed those treaties that we never read. The Prime Minister, when they signed them, they just signed them because people are sitting there, they are taking pictures, and they are looking good in their suits, and they are going to make a statement in the newspaper that these are the agreements and those are the best deals that we have signed with the government of Australia, with the government of Germany, with the government of United Kingdom. We never read that. We are just happy that they are trying to be our friends. We are very content with that. What is written in it, we never read it. We don't want to understand it. But there are consequences, of course, when you sign something. When you sign up for something, there are consequences, isn't it? So the pain started to come when the Tathyan company was refused the contract, and they started looking into the legal ways of enforcing the government of Pakistan to abide by the terms and conditions that the government of Pakistan had agreed with. Yeah? आपने कभी सुना है contract to marry? Mangani, आपको पता है Michael Jackson was once sued in the United States because by his fiancée because he refused to marry her. Similar situation. You can already imagine what kind of case it is. Similar situation. You can't get out of the relationship. No matter how desperate you are, you can't get out of the relationship. The kind of relationship the government of Pakistan has entered into with this, and that relationship is also for the purpose of killing. Yeah, killing. So, cutting the long story short, the Australia-Pakistan bilateral investment treaty
signed somewhere in 1990s, was used by Tatyan to sue the government of Pakistan. Where? At an international arbitral tribunal. Why? Because the government has signed that treaty, isn't it? They wouldn't have been able to do that unless the government had not signed that treaty. And icing on the cake for them was a decision made by the Supreme Court of Pakistan. Prior to that, High Court of Pakistan. Hamare judges jo hain, they are also very flary kind of people, you know. They want fire, they want publicity, they want media, they want, I mean, where in other parts of the world you have seen judges to do all that. But here we have unfortunately, that's part of our society, part of our culture. But sadly what happened, that nobody understood, even the highest court of justice in this country didn't understand the actual consequences that could have been produced because of that treaty between Australia and Pakistan. They thought we have jurisdiction. They thought we will decide it in our country and nobody will be able to ask anything from us. That was not the case. Because the International Tribunal, they have jurisdiction independent of any jurisdiction or any law which is part of Pakistan. Any court's jurisdiction or any law which is law of Pakistan. Their jurisdiction is independent of it. So आपने वो सुना ही होगा इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो फैसला किया in 2013 on वो और नाम से रिपोर्टेड है केस लेकिन बेसिकली उसमें तथ्यान केस जो है वो आपको पता है किस नाम से रिपोर्टेड है किसी को पता किस नाम से रिपोर्टेड मेरे पास लिखा हुआ याद नहीं मैं बताता हूँ वो है जी मौलाना अब्दुल हक बलोच अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्टेड है PLD 2013 आप ये जरूर पढ़िएगा take a note of it and I'll share it with you as well through Professor. So what happened that the Supreme Court of Pakistan decided that the contract which was awarded in 1993 to Tathyan Copper to start their operations of commercial discovery and everything else was based on corruption of government officials. Of government officials, see corruption, I really admire you guys to be honest. I mean, I wish I had, udhar baith jaye please, udhar baith. This is what brings me to Pakistan, honestly. The passion of our youth to learn, to know what's going on, to make themselves upfront and current with the situations. So what happened? Dr. Sahab, मुझे जरूर बताइएगा time का because I can really be lost in it. I can go on for hours. Yes, but 3:30 is the bus time. Okay. So this special. So I'll use another 10-15 minutes, Yes. and then we can have a Yes. segment. वैसे तो जो भी आपके ज़हन में सवाल आए प्लीज जरूर पूछिए. I'm trying to make it as interactive as possible. I didn't want it to be like lecture kind of thing because it shouldn't be like that. So हुआ ये प्यारे बच्चों कि चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी पाकिस्तानी कानून तो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड है. पाकिस्तानी कानून कहता है कि ये करप्शन की वजह से हुआ था. इस वजह से पाकिस्तान की तो कोई लायबिलिटी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड. लेकिन जो इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने केस जा रहा था वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी करप्शन का सबूत पेश नहीं किया. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट प्रोसीडिंग. Government of Pakistan did not produce, apart from the judgment of the Chief Justice. Of judgment of the Chief Justice, Pakistan mein is a precedent or is binding, it's not binding on the international tribunal at all. उन्होंने क्या किया? Unfortunately, they didn't say it, but because I was part of the proceedings, they didn't write it in the award, but they were quite surprised the way it was written, the way it was produced. Sorry, I'm a bit critical. I don't want to leave any ambiguities. That is my ambition. So, हुआ ये कि ट्रिब्यूनल ने वो जजमेंट बेसिकली जो
जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की थी उसको throw away in the bin and decided on the basis of the evidence produced before it. And there was no evidence of corruption presented by the government of Pakistan, so they didn't have any reason to believe that the contract between the government of Pakistan and Tatyan should not be enforced. And they made the award. In 2013, and after 2013, the proceedings were really rigorously contested by Tatyan at the International Tribunal. And I think the first award came in somewhere 2016, the award on jurisdiction, because there are different stages in international arbitration. The second award, which was on merits, but part award, it came I think in 2017, but by the end of 2018, they had delivered their full award against the government of Pakistan to the tune of how much? $6 billion. Billion. कितना zero होते हैं? 9. 6 billion US dollars की compensation किसने पे करनी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान कौन है? गवर्नमेंट. और गरीबों तुसी हो पाकिस्तान. न्यूट्रल. You are Pakistan. You are Pakistan. I hope you realize that. I sincerely hope. Because that is the word that you are going to do. It is going to come out of your pockets. Because these people sitting in parliaments, people sitting in, big places, they're not bothered. They're not going to do anything about it. Whatever they are doing is trying to save their own skin. Because they don't want to be the target here. Everybody is trying to save their own face. And this is exactly what is going on in the Supreme Court. In the Supreme Court at the moment. They are trying to save their own skin. So what they did, after 2017, of course, government of Pakistan said, who cares, whatever. Tribunal ne sada ki karna. So nobody cared. But then they filed for the execution. Of course, you are lawyers, you are going to be lawyers, you know the process. They filed for execution, and an international award, unlike a judgment passed by a court in Pakistan, can be enforced anywhere in the world. जहाँ पे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट होगा, वहीं पे enforcement फाइल की जा सकती है. So they filed enforcement everywhere. You can already see. They were on the moon. $6 billion plus interest, accruing interest. तो उन्होंने इसको परसू करना शुरू कर दिया. They filed suits against government of Pakistan for the enforcement of the award in the United States, in a lot of different places, including one suit was filed in Malaysia where the Pakistan International Airlines plane was attached by the court. उन्होंने कहा कि जा सकता. So this is exactly what was going on, and they made the government of Pakistan really frustrated with those multiple suits, and this was their objective. They wanted to make them feel embarrassed, and this is exactly what they did. Eventually what happened, that the government of Pakistan decided to renegotiate with them. And they said, why we have to? We need to get paid. और आप हमारे कितने पैसे हो गए? $10 billion. हर रोज कितने बढ़ रहे हैं पता है आपको? आपकी जेब में से हर रोज कितने पैसे निकलेंगे पता है आपको? Millions of dollars every day because of the reoccurring interest. समझते ना आप reoccurring interest? Multiplicity of markup. समझते ना? रोज के रोज बढ़ते रहते हैं. हर रोज उसके ऊपर millions of dollars ऐड हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम रीनेगोशिएट करते हैं आपके साथ, प्लीज आप आ जाएं, बात करते हैं बैठ के. उसमें फिर आपको पता ही है हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स हैं उन्होंने भी रोल प्ले किया. नाम नहीं लूंगा, उठाए ना जो, तो उन्होंने भी रोल प्ले किया. उन्होंने कहा कि जी चलें आपको राजी कर देते हैं जिस तरह भी राजी होता है. तो उनको फिर इन्होंने राजी किया. अब आपको पता है कि जो हारा हुआ बंदा होता है वो किसी जीते हुए बंदे को कैसे राजी करता है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं. उन्होंने उनको राजी किया. राजी करने के बाद माफी शफी मांगी, उन्होंने माफी दे दी. उन्होंने कहा जी कि ठीक है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है. प्रोफेसर साहब, जब हारा हुआ बंदा किसी जीते हुए बंदे के साथ नेगोशिएट करता है तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो नहीं करते. दैट इज द डील दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू साइन. हु इज गोइंग टू पे?
I did not really hear well. You guys are going to pay for it. You are the next generation. It is your resource. वो प्रोजेक्ट 20 साल का है कम से कम. कॉपर 20 साल में पता नहीं मैं जिंदा हूँगा कहीं. You guys are going to pay for it. Your generations are going to pay for it. All right? So it's not something. I cry for it, honestly. मुझे रात को नींद नहीं आती. खुदा को रात को 4 बजे मैं और राजा साहब कोर्ट केस प्रिपेयर कर रहे थे. रात को 4 बजे. This is your loss. Your loss. तो बात यह है कि अब इन्होंने एक डील नेगोशिएट कर ली है जी. वो डील क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतने पैसे मिलेंगे इसमें से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को इतने पैसे मिलेंगे इसमें से, 50% जो है 51% जो है वो टैक्सियाँ लेके जाएगी इसमें से, और बाकी पैसे जो हैं वो 25% इन गवर्नमेंट्स को मिल जाएंगे. लेकिन अब वो डरे हुए हैं, ज़ाहिर है उनको गारंटीज चाहिए. उनकी एक दो जो शर्तें हैं ना, उनमें से एक शर्त यह है कि लीगल गारंटी चाहिए. लीगल रिस्क होता है ना, सबसे बड़ा पाकिस्तान में रिस्क क्या है? लीगल रिस्क. सबसे बड़ा रिस्क पाकिस्तान में क्या है? लीगल रिस्क. तो उन्होंने कहा जी कि हमें लीगल रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ करके थे. उन्होंने फिर खुद ही सजेस्ट किया. दिस इज दे हैव सजेस्टेड. ये इतने क्रिएटिव किधर से? उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही आप चले जाए, गवर्नमेंट जाए, पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाएं और उनसे ठप्पा लगवाएं कि जी जो हम कर रहे हैं वो सही है. क्योंकि बाद में कोई आ जाएगा, कोई नया जज आ जाएगा, कोई एम्बिशियस बंदा आ जाएगा, वो कहेंगे कि जी ये तो ठीक नहीं हुई, तो फिर हमारा प्रॉब्लम आएगा. तो ये हमें पहले ही आप सर्टिफाई करवा के दें सुप्रीम कोर्ट से. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट टुडे. So the Supreme Court has been presented with a technical part of the deal, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है जी कि ये इस तरह हम निकालेंगे, इस तरह हम इसको कमर्शियली वायबल करेंगे, इस तरह हम बेचेंगे. और एक उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि जितने इससे पैसे प्रोड्यूस होंगे इस तरह हम पैसे आपस में बांटेंगे. और एक उसका ऑफ कोर्स लीगल एंगल है. तो ज़रा बीइंग अ लॉयर मुझे तो टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का तो इतना पता नहीं, उतना ही पता जितना आपको पता है या जितना आप पता कर सकते हैं ऑनलाइन जाके चीज़ों को पढ़ के. लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स का तो पता है, इसी में बाल सफ़ेद किए. तो when we were talking about this, me and a few friends, I will give full credit to Dr. Zaullah Ranja Sahab. I don't know how many of you know him. He is a Supreme Court lawyer here. So we decided to file a plaint, a petition before the Supreme Court of Pakistan to become a party in the referendum. जो प्रेसिडेंट ने भेजा सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ये स्टैंप लगा दें कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, ताकि बाद में इसको चैलेंज न किया जा सके. So we decided to intervene. We filed this petition. If you want a copy of this, I'll be happy to share. इसमें हमने क्या कहा, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ अगले 2-3 मिनट और then we'll have a free and frank discussion. So इसमें हमने ये कहा जी, दो चीज़ें हमने कही हैं. एक तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पैराए में रह के आपने करना जो भी करना है. आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू द फाउंडेशन. नाउ हु एम आई एंड राजा साहब सानू की स्टेप अप है. पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट डू यू हैव टू डू विद दिस. जो पहली हर्डल हमने सेटिस्फाई करनी होती है when you try to join a court proceeding is that what do you have to do with this. तो being a citizen of Pakistan, हमने ये पिटीशन फाइल किया जी कि इसमें जो ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, उसकी बेस पे जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको अवेल करने की कोशिश की है. उन्होंने बताया जी कि इक्वालिटी जो है. Now I'm going to tell you a little bit about law as well, okay? So if you want to sleep, that's fine. So basically हमने उन्हें ये कहा जी कि इक्वालिटी नहीं है इस डील में. इक्वालिटी नहीं. अब इक्वालिटी क्यों नहीं है? बड़ी सिंपल सी प्रोपोजिशन है, मैं आपको बताता हूँ. मुझे जज साहब को समझाने में 2-3 घंटे शायद उससे भी ज़्यादा लग जाए. तो सिंपल सी प्रोपोजिशन ये है जी कि एक बाहर से बंदा आता है, ये कंपनी आती है, उसको ये हक दे दिया जाता है कि आप पाकिस्तानी अदालतों को टोटली इग्नोर करके आप जो भी मसला हो पाकिस्तानी अदालत के साथ, पाकिस्तानी कानून के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ,
आप उसे ले जाएं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। बाहर से कोई कंपनी आती है तो हम उसे ये लिख के दे देते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे, तो इस पाकिस्तानी कोर्ट में नहीं जाना। आप पाकिस्तानी कोर्ट तो खराब करेगा, आप बाहर ले जाएं। ये इनइक्वालिटी कैसे है आपके साथ? आप तो नहीं ऐसा कर सकते। अगर आपको इलाके का काउंसलर या इलाके का चौधरी या जो भी होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पुकारे जाते हैं, वो अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है या कोई ब्यूरोक्रेट से मिल के, पटवारी इलाके से मिल के, आपको पता है ये बड़े पावरफुल लोग, तो आप किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? जो भी हमारे टूटे फूटे कोर्ट्स हैं उधर ही जाएंगे ना, उधर ही जाएंगे। आप तो नहीं जा सकते इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो क्या है, आपके साथ इक्वल सलूक हो रहा है? हो रहा है? हाँ? तो डू यू फील लाइक बैड अबाउट दिस? डू यू? हाँ? ठीक है, हमारी मजबूरियां हैं, ठीक है, हम वो ताबा उधर से खुद नहीं निकाल सकते, ठीक है, हम उधर से सोना खुद नहीं निकाल सकते, हमारे शायद हाथ टूटे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आपको फ्री हैंड ही देते। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आपको ये कहें कि जी जो भी आप करेंगे हम, हमारी अदालतें हैं, आप बताएं। सर उलन तो ये बात है ना सर कि पाकिस्तान को कतर और सऊदी अरब के साथ या किसी और इस तरह मुल्क के साथ कंपेयर करना, सर सऊदी अरब के पास एग्रेरियन ज़मीन नहीं थी, पोर्ट्स वगैरह भी उस लेवल के नहीं थे। पाकिस्तान के पास तो सारा फर्टाइल पंजाब और सिंध पड़ा हुआ है और पोर्ट्स भी है, बाकी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए तमाम रिसोर्सेज है। तो क्यों पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर ये डिपेंडेंसी शो की रिसोर्सेज पे कि एक शॉर्ट रन है, रिसोर्सेज निकालो और कतर और दुबई बन जाए। सर अवलन तो मैंने ये बात की। सेकंड बात ये कि अगर कोई ये एक्सपेक्ट करा कि रेको डिक के ज़रिए या मोरी के ज़रिए इन प्रोजेक्ट के ज़रिए बलूचिस्तान के आवाम को फ़ायदा पहुँचना है, तो मैं उन्हें सिर्फ ये कहूँगा कि सूए गैस के ज़रिए सूबे के ही लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचा है सर। तो इसका जनाब मैं आपका बहुत मशहूर हूँ यार, आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। आपने जो भी दोनों सवाल किए हैं दे आर लाइक रियली स्पॉट ऑन। अब देखिए क्यों हम ये करते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ तो है। हम क्यों नहीं अपने साइंटिस्ट्स को बाहर भेजते, उन्हें ट्रेन करते, उन्हें कहते कि आ जाओ यार कुछ सीखा वहाँ से, कुछ हम पैसे लगा देते हैं, कुछ चलो 50% ही निकाल देंगे सालाना, क्योंकि माइनिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू टेक्निकली। द वे आई अंडरस्टैंड इट, इट इज़ नॉट ईजी टू माइन कॉपर और गोल्ड, but whatever we can do, we should, first thing, we should try to do it ourselves. We should try to do ourselves. If we can't do ourselves, at least we should negotiate well. गाड़ी ठीक करवानी हो, कोई खरबूजा लेना हो, तो क्या करते हैं हम? 2-3 दुकानों से तो यार पता करते हैं ना, कम से कम। बड़ी कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कम से कम थोड़ी सी रिसर्च तो करते हैं ना। जी सर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं अटर करना चाहता हूँ वो ये है सर, ठीक है सर डील स्ट्राइक करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन 1990 में डील स्ट्राइक करते वक्त सर बलूचिस्तान के आवाम के ख्वाहिशात को या उनके रियल उनको इंस्पिरेशंस को किसी ने नज़र नहीं रखा। तो देखिए ये एक चीज़ है इनाम, बलूचिस्तान की आवाम को ऑन बोर्ड लेके आना। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी तो जिस तरह की आपको पता है ना, लोकल जो कम्युनिटी है। अब देखें फ्रैकिंग का पता है आप लोगों को? एक नई टेक्निक है जिसके ज़रिए गैस निकालते हैं। वो पत्थर जो है ना ज़मीन में, उसमें गैस ट्रैप हुई होती है। क्योंकि मैं डील करता रहता हूँ इस तरह की चीज़ों को, तो मुझे थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ है। फ्रैकिंग एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें वो पत्थर को ना ज़मीन के अंदर जो नीचे, बहुत नीचे जो पहाड़ है, उनको वो तोड़ते हैं और उनसे जो गैस निकलती है ना तोड़ने से पत्थर को, वो फिर गैस कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ अ न्यू टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट गैस। अब उसे होता क्या है, जब वो पत्थरों को तोड़ते हैं ना नीचे, तो उससे वाइब्रेशन होती है ज़मीन में, तो बाज़ औक़ात वो झटके जैसे ज़लज़ले के झटके होते हैं ना, वैसे झटके फील होते हैं। तो इन यूनाइटेड किंगडम देयर वाज अ बिग रिजर्वायर ऑफ गैस इन अ लोकल टेरिटरी। तो वहाँ पे उन्होंने फ्रैकिंग वालों को ठेका दिया, लाइसेंस दिया कि आप निकालें वहाँ से। तो वो जब झटके लगते थे तो लोकल पॉपुलेशन डिस्टर्ब होती थी। वहाँ पे डेवलपमेंट के तो इतने इश्यूज नहीं है जितने आप बलूचिस्तान में हैं लोगों को, बट इवन फॉर दैट डिस्टर्बेंस दे कैंसल्ड द प्रोजेक्ट। दे सेड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द पीपल, इवन फॉर बर्ड्स, यू नो। एक उसमें पिटीशन जो थी ना फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में,
उसके अगेंस्ट वो ये थी कि जो बर्ड नेस्टिंग है इस एरिया में, ऐसी बर्ड्स रहती हैं जो और यूके में नहीं है कहीं, तो उनकी नेस्टिंग जो है, दे आर नॉट एबल टू नेस्ट, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ जो झटके लगते हैं, दे आर स्केर्ड एंड दे आर रनिंग. Even that was considered. We are not even equal to birds, ये human beings. तो इनाम आपका सारी रिजर्वेशंस ठीक है. मैं थोड़ा लीगल पॉइंट पे आना चाहूँगा. लीगल पॉइंट इसमें यह है कि अब जब गवर्नमेंट्स इस तरह के डील्स करती हैं, ठीक है ना, तो उसके पीछे गवर्नमेंट के क्या मुहरकात होते हैं. ये तो फंसे हुए ना, ये तो आप बिल्कुल उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ है, तो इनके पास तो ऑप्शन ही और कोई नहीं है. अगर आप कोई ऑप्शन दें भी, जैसे हमने कुछ ऑप्शन दिए सुप्रीम कोर्ट को, जी ये ना करें ये करें, लेकिन आई डोंट हैव एनी होप टू बी ऑनेस्ट. वो तो वैसे भी कोई नहीं है, तो इसमें तो वैसे बिल्कुल ही नहीं है कि इसमें कुछ आउटपुट इसकी कोई बेहतर नहीं है. लेकिन ये क्यों इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो भी ठीक है, और मन पैसे भी तो बनाने हैं, पैसे भी तो बनाने. तो उससे एविडेंस भी देने देना सर. अब मौलाना अब्दुल हक साहब पिटीशन फाइल की थी, तो रिश्वत थी केयरटेकर बोर्ड में, उनके पास लाइसेंस देने की अथॉरिटी नहीं थी. फिर बाद में दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उनके जो मिनिस्टर्स ने डील की. तो डील तो किसी ने करनी है. अगर डील कर ली है आपके मतलब कि रिलेशंस है कि करप्शन हुई है, तो सबूत दे जाके. एग्जैक्टली हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हुआ ये कि जब गवर्नमेंट ने प्लीड किया ना अपने सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे जब प्लीड किया तो मौकफ लिया डिफरेंट, मौकफ लिया कि करप्शन है. जब प्लीड किया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के सामने तो मौकफ लिया कि करप्शन शायद हुई होगी, सुप्रीम कोर्ट से पूछना, ठीक है. तो देखिए ये क्यों चाहते हैं, ये हम पॉलिटिशियन जो है ना हमारे, ये भी ये चाहते हैं कि कोई मुकदमा पाकिस्तान की अदालत के सामने इस तरह करना जाए. क्यों? क्योंकि वो तो पब्लिक नॉलेज बन जाता है ना. फिर वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज दैट इट कैन बी केप्ट सीक्रेट. वो कमर्शियल कोर्ट्स होते हैं, दे आर नॉट पब्लिक कोर्ट्स. और गवर्नमेंट जब आप अप्लाई करें, आप अप्लाई करें कि गवर्नमेंट ने जो प्लीडिंग वहां पे सबमिट की है उसकी कॉपी दे दें आप, नहीं देंगे बिकॉज द गवर्नमेंट. सर्वे से पाकिस्तानी अदालत रात को 12 बजे खुल जाता है. अपने जो एक इदारे के मफादात उसके साथ मिले जुले हों, तो आवाम के लिए क्यों नहीं खुल सकता? किसके पास जवाब है इसका? मेरे पास तो नहीं. सेशन के बाद रोज 2 महीने बाद आप करें Please, if you allow me. जी सर. I'm not as a student but practicing a lawyer. सर, I appreciate you have come from England in order to initiate public proceeding. On one side, we have commercial award against us. On the other side, you are going to initiate public interest proceeding on the basis of human rights. If, for the sake of arguments, we say yes, you have got the case, then where you see yourself, where you're going to see Supreme Court decision on one side, on the other side, we have big award against us. Don't you think so? We'll have conflict of laws on the both sides. I appreciate whatever you have done. I'm not being too critical. I appreciate it. But I need to understand I got you. at the end of the day. What's your name, sir? Mansoor. Mansoor साहब, thank you very much. You. आप ने बड़ा अच्छे तरीके से सवाल किया. देखिए, what I want from it, I want nothing from it. It's not from me, honestly. मेरे objectives थोड़े different हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा. क्योंकि आप practice से आए हैं, तो मैं पहले practice वाली side को address Actually, I'm from the same. I'm from England as well. I've been practicing Oh, in both the countries. Very good. Therefore, I have this. आपको भी person- रात को नींद नहीं आती. Actually, I do different type of practice. अच्छा actually. ठीक. अच्छा मैं आपको बताऊं इसमें देखिए, when you all options you have are bad. हम उस सिचुएशन में ना जिसमें हमारे पास कोई अच्छी ऑप्शन है ही नहीं. जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना कि when you don't have even a single good option for you, then you go for the least dangerous one, the least one that you can live with at least. अब यहाँ पे जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो प्रपोज किया ना, that is exactly the way the original contract was, with small differences. Some noticeable differences, but mainly small differences. लेकिन जो मेरा पॉइंट है इसमें मेन वो ये है कि पाकिस्तानी कोर्ट्स जो हैं जब तक ये मैटर्स उनमें नहीं आएंगे. इस पिटीशन में मैंने जो अर्ज किया ना वो ये है, बड़ा छोटा सा क्लेम है ये,
इट्स नॉट अ बिग थिंग इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। और मुझे पता है कि इसमें पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो आई डिडंट चैलेंज दैट एट ऑल। आई एक्चुअली सेड दैट डू इट। I actually asked the Supreme Court to facilitate the government in every possible way to get that deal done. However, we should make best efforts to put in place the safeguards that we possibly can. कि जो पहले हुआ है ये कम से कम आइंदा ना। And we should not set a precedent। अब देखें कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आएगा वो कहेगा कि जी आपने उनके साथ तो ये सलूक किया है, तो हमें तो आप कह रहे हैं कि ये करें, तो यू आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट। और अगर आप इसको थोड़े और ब्रॉडर पैराए में चले जाएं तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सब्सक्राइबिंग टू अ कॉलोनाइजेशन डील। आपको पता है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, सुना ही होगा आपने, ये कैसे आए थे? मैं ये नहीं कहता आज का वो दौर नहीं है कि जब मुल्क दूसरे मुल्कों को फतह करने के लिए फौज भेजते थे। उस दौर में भी वो काफी समझदार थे, वो फौज से पहले लोग भेजते थे, कंपनियां भेजते थे। अभी वो ऐसा नहीं है कि टेरिटरीज के ऊपर ऑक्यूपाई करने का तो रिवाज ही नहीं है। उस तरह उनको शौक भी नहीं है कि वो यहाँ पे आके हमारे मसाइल हल करें। हमारे उनको कोई शौक नहीं है कि वो हमें गवर्न करें। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑल दे आर इंटरेस्टेड इन आवर रिसोर्सेज। I want to ask a question that, sir, in the beginning, as you said, that sir, the Balochistan Development Authority, which has signed this deal with the Titan, sir, the Supreme Court later on said that they have done some corruption, जो वो चीज़ें सब है। और उसकी वजह से जिस तरह आपने अभी कहा कि हम पाकिस्तान बतौर एक इन्वेस्टमेंट मार्केट अपना रेपुटेशन भी लूज कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे सर कॉस्ट भी आ रहा है, कंपनसेशन भी आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस डिक्लेयर करे कि ये तमाम करप्शन की वजह से। तो क्या सर नहीं कहा समान क्वेश्चन है, तो क्या जिन्होंने करप्शन की थी, जिनकी वजह से सब चीजें सब उनके अगेंस्ट भी किसी ने कोई ट्वीट किया है सर? यार आप बताओ ना, मुझे सारे सवाल मैं तो नहीं जवाब दे सकता। आप बताओ ना कि उनका क्या बना जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने पाकिस्तान में माल बनाया है। अच्छा सही भाई, जिन्होंने पाकिस्तान में माल बनाया उनका आपने क्या बिगाड़ लिया सर? वो इंग्लैंड मैच। जी सर, जी सर, बेटा सुने, इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ द ग्राउंड्स जो आपने बताई कि आप ह्यूमन राइट्स के तहत जा रहे हैं कि ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन वो तो सर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो तो सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। एक जो इंटरनेशनल लेवल का एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हमारे जो 1940 वाले एर्बिट्रेशन लॉज हैं या जो हमारे जो कोर्ट हैं उनके ऊपर वो एतमाद कैसे करेंगे? और ये जो एर्बिट्रेशन की शिक जो 1990 के एग्रीमेंट में थी या 93 वाले में, और अभी भी वो उसको क्यों नहीं 61 वाली को क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? जबकि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में जो सब्जेक्ट्स हैं, एक तरफ क्या कहते हैं स्टेट होती है और एक तरफ अपना क्या कहते हैं दूसरा कोई भी कंपनी या फर्म हो सकती है। तो ये सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हैं, तो वो उन्हीं को फॉलो करेंगे। आपने बिल्कुल बड़े अच्छे वैलिड सवाल किए हैं, बड़े डेंजरस सवाल किए हैं। बेसिकली मेरी जो पिटीशन है इसके अगेंस्ट यही आर्ग्यूमेंट है। दिस इज एग्जैक्टली द आर्ग्यूमेंट व्हिच इज अगेंस्ट माय पिटीशन। अब देखें, आपने ये कहा जी कि जो बाहर से बंदा आता है वो पाकिस्तानी तो नहीं है, ठीक है ना, उसको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हम तो वैसे ही घुरा को देख लें एयरपोर्ट पे इधर उधर तो हम तो कहते हैं यार क्या बात, तो हम तो स्पेशल ट्रीटमेंट ही देते हैं सबको वैसे ही। इस केस की वजह से रेको दिक, क्योंकि सर मैं पेपरा में भी सर्व कर रहा हूँ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में, इस केस की वजह से बात का तो हमारे पास कोई ग्रीवेंस आती है, अब पेपरा सेकंड टियर ऑफ ग्रीवेंस भी बन गया। तो हम ये देखते हैं कि यह कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो नहीं हो गया कि हम इसके अगेंस्ट फैसला दे दें, और रेको दिक वाला जो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट डिसीजन चला गया तो हम तो के ट्रिब्यूनल लैंड कर रहा था। आपकी रिजर्वेशंस ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पे हमें समझना पड़ेगी, दो तीन चीज़ें बेसिक समझना पड़ेगी। एक बेसिक चीज़ ये है कि इकोनॉमिक बेनिफिट और चीज़ है। मैं आपको कहूँ कि ये घर है मेरा, आप किराए पे ले लें, चले आप मेरे दोस्त हैं या आप गोरे हैं, इंग्लैंड से आए, वो तो कनाडा से आए ना, बारकोट, आप कनाडा से आए हैं, ये मेरा घर है, ये किराए पे ले लें, तो मैं वैसे तो 25,000 किराया लेता हूँ, आपसे 20,000 लूँगा। इकोनॉमिक बेनिफिट की बात कर रहे हैं, यारी दोस्ती में इम्प्रेस हो के अपनी ज़रूरत से
किसी को इकोनॉमिक बेनिफिट दे दिया, ठीक है। पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट डील्स विद इकोनॉमिक बेनिफिट, बट इट डजंट स्टॉप देयर। मैं ये कभी नहीं कहता कि फॉरेन इन्वेस्टर को आप फैसिलिटेट ना करें, फॉरेन इन्वेस्टर को आप इंसेंटिवाइज ना करें, करें जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम तो निकाल ही ना पाते वो कॉपर, कभी निकाल ना पाए, अगले 50 साल हो सकता है ना निकालते, यहाँ निकालो तो सही जैसे भी। लेकिन इकोनॉमिक इंसेंटिव देने के साथ साथ कुछ अपने आप को भी तो बचाएं, कुछ सेफ गार्ड तो रखें। अब जिस प्रोविजन की आप बात करें, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो इक्वालिटी की बात करता है, उसमें आप सही कह रहे हैं सिटीजन का लफ्ज़ आया, मैं 5-1000 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, सिटीजन का लफ्ज़ उसमें है। लेकिन देखें उसके ऊपर जो जुरिस्प्रूडेंस है ना, तो ये है हु इज़ अ सिटीजन फॉर द पर्पसेस ऑफ दैट सेक्शन और दैट आर्टिकल, एनीबॉडी हु इज़ इन दिस कंट्री, who is physically present in this country or has business or commercial interest or property in this country should be treated equal to the citizen for the purposes of, जो उसमें प्रिंसिपल है वो है इक्वालिटी। और इक्वालिटी भी दो तरह की, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी विच आर इन आर्टिकल 25। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है ना, उसमें ये कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप इंसेंटिवाइज ना करें। आर्टिकल 25 कहते नहीं है, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट आप दें। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उसमें एक दो जजमेंट्स ऐसी हैं, मसलन टैक्स इंसेंटिव दिया किसी को, चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो क्लास ही डिफरेंट है, ठीक है ना, तो उस क्लास के लिए तो इंसेंटिव दिया जा सकता है। आई एग्री विद दैट, टोटली सब्सक्राइब करता हूं। हाउएवर गिविंग commercial or economic incentive or benefit to somebody is very different from selling your soul. ये नहीं समझते कि हमारा वो जो jurisprudence की बात है, वो जो हम केस को प्लीडिंग की हमारी वो जो पावर है वो कम है इंटरनेशनल कोर्ट पे। हमारी पावर है किधर सर? इंडिया के साथ फिर भी एक अभी पार्शियल अवार्ड हुआ है वाटर रिसोर्सेज ने अभी की है सेक्रेटरी भी इंडस वाटर पानी लापता रिवर्स से जेलम से मिलेगा डेफिनेटली 9 से कम हुआ अगर उनके फिर हमें नहीं मिलेगा, उनका प्लस 9 हुआ तो 9 का 9 यूनिट्स हमें बंद हो जाएगा। लेकिन पार्शियल अवार्ड हमने बेटर तरीके से गेन किया है। देखिए जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, वी आर नॉट बैड पीपल इनहेरेंटली, वी डोंट वांट टू, कुछ होंगे भी जो इस हद तक चले जाते हैं, वी डोंट वांट टू सेल अवर सोल। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वी आर मिसलेड, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है ना, इंडस वाटर ट्रीटी तो बड़ी रिगोरस नेगोशिएशन और वार्स के बाद साइन हुई, और उसके बाद एक बाकायदा उसका एक प्रोसेस बना, उसके अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है विच इज़ इक्वली अवेलेबल टू बोथ स्टेट्स। और वो तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटी है ना, उसमें तो आप जाग के ट्रीटी की ना, जो हमने सो के की हुई है, ठीक है ना। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज वी हैव साइंड देम नॉट रियली थिंकिंग अबाउट देम in that fashion, in that way. तो उसमें जो हमने अपने ऊपर obligations डाल दी होंगे ना, they are quite onerous. सर आपने अपने आपके लिए हो गए तो आप करेंगे जो मैंने बताया तकरीबन इसी तरह के हुआ डिफेंस भी इस तरह का है, तो उसके लिए आप तैयारी की है आपने, और अल्टरनेटिव ऑप्शन दी है arbitration के वजह से? जी बिल्कुल दी है। उसमें देखें अब मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके सामने ये रेफरेंस है, मैं क्या चाहता हूँ उनसे, जो मेरा रिलीफ है, I ask for only one thing. आप वो भी समझेंगे शायद दीवाने का हाथ, बट आई आस्क फॉर इट। सो व्हाट आई आस्क इज कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो तो कम से कम सैक्रिफाइस ना करें। आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अलाउ करें उन्हें। देखिए इंटरनेशनल लॉ का एक प्रिंसिपल है, काल्वो डॉक्ट्राइन, शायद आपने सुना, ये काल्वो डॉक्ट्राइन है, मैक्सिकन, वो हमसे थोड़ा पहले जाग पड़े थे मैक्सिको के लोग। थैंक यू वेरी मच, सॉरी इट इज ड्रैगिंग ऑन, बस का टाइम है इसलिए कोई बात नहीं, जो जाना चाहते हैं वो जाएं। जी सर आपने मैं एक अपनी बात मुकम्मल कर लूं, क्योंकि मैं उनका जवाब देना चाह रहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगूं, फिर आप प्लीज सवाल कीजिएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम आस्किंग देम इज टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल टू यू। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, और एट द सेम टाइम हैव एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इवेंट, ठीक है ना।
ताकि उनको भी सिक्योरिटी रहे कि अगर हमें यहाँ से रिलीफ ना मिले तो हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या? उससे दो चीज़ें हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, उनको ये डर होगा कि ये लोकल कोर्ट में चला जा सकता है, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी टर्म्स एंड कंडीशंस। जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं? उसका क्या मकसद है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसे कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आप में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होंगे, वो कैसे एनफोर्स होने हैं। ठीक है ना? जुडिशियल रिव्यू का तो ये मकसद है ना। अब जब आप इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से कर रहे हैं जिसमें आप कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का राइट ही उससे आउस्ट कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू से उसको ऑफेंड कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू को, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर अंडरमाइनिंग द एंटायर फंडामेंटल राइट्स of the Constitution of Pakistan, not just the equality right. That is one for sake of argument. आप पाकिस्तानियों को उनसे ये उनका हक छीन रहे हैं कि उनको अगर इस तरह के मफाद आमा का कोई इसमें कंसर्न नजर आए तो वो पाकिस्तानी अदालत का दरवाजा खटका सकें, जैसी भी अदालत है। समझते हैं आप? पाकिस्तानियों आपके पास हक होना चाहिए कि नहीं? इमरान खान ही बनता जा रहा हूँ मैं। पाकिस्तानियों आपके पास ये हक होना चाहिए कि नहीं? सर हक तो होना चाहिए, लेकिन इस मैटर को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया गया बलूचिस्तान गवर्नमेंट और उनकी जो पार्टीज वगैरह नेशनल गवर्नमेंट्स ने। तो इस मैटर को हम उनकी नज़र से देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स और इक्वलिटी और ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन बिजनेसमैन के जिस तरह हम देखते हैं कि कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती है, वो पूरी मतलब के ऑपरेट करती है उस एरिया में, तो उनकी भी अपनी मतलब के कॉस्ट होती है पे करने की। तो उन्होंने पहले जो है ना रिपोर्ट जो PhD अमेरिकन कंपनी के साथ हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट किया 2006 में, उन्होंने बहुत पैसे लगाए हैं। यस सर, बहुत पैसे लगाए। 2006 में उन्होंने टित्यान के साथ वो मतलब के सोल्ड कर दिए अपने शेयर, और फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट दरमियान में आ गई कि नहीं ये आपके आप जो कहना चाह रहे हैं ना वो मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसको भी सामने रखना चाहिए, उनको भी राइट्स। मैं देखिए मैंने शुरू से ये कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज करें, जितना मर्जी करें, ठीक है ना? वो नहीं आएंगे तो हमसे तो कुछ भी नहीं होगा। हम तो अपनी सड़कें नहीं बना सकते। कोरिया की कंपनी ने मोटरवे बनाए, पता है ना आपको? हम तो अपनी सड़कें नहीं बना सकते, हम अपने घर नहीं बना सकते। पता नहीं कहाँ से वलंशिया, पता नहीं किधर किधर से लोग आके यहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। डैम्स वो बना रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर पाते ना। हम तो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर के साथ हमें प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर को तो जितना मर्जी फैसिलिटेट, जितना करें कम, ठीक है ना? क्योंकि अदरवाइज तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है? लेकिन उसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि टैथियान का कोई एक्स्ट्रा वगंजा का कोई एजेंडा है, या वो कोई इक्वेटिंग टैथियान विद ईस्ट इंडिया इज नॉट राइट, टोटली इनकरेक्ट एक्चुअली। What should be done is to have a balance, ठीक है ना? अब बेसिकली जो ये करंट डील चल रही है ना, इसमें तो बैलेंस है ही नहीं ना। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास बैलेंस करने के लिए ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमने जो उन्होंने करना है वो करना है, वो तो डन डील है। लेकिन 75 और 20 और ये शेयर्स तो डन हो गए उनके। नहीं, वो तो हो गए ना। देखिए जो कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, कमर्शियल एस्पेक्ट है इसका, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इसका, उसके ऊपर तो कोई लेवरेज उन्होंने दी नहीं है। उन्होंने जो लेवरेजेस दी है ना, वो लेवरेजेस उन्होंने सिर्फ दी हैं टू हाउ टू मिटिगेट फ्यूचर लीगल एक्शन, हाउ टू शेयर प्रॉफिट्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने जो है वो आपके साथ आर्ग्यू की, आपके साथ नेगोशिएट की। अदरवाइज तो उन्होंने कहा दिस इज द डील, डू इट। सो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर जो है, हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि बाहर से कोई कंपनी आएगी तो वो हमारे लिए सही नहीं है। वो अच्छे काम भी करते हैं। आपको पता है लैक्स एंड टोबैको, जानते हैं आप? लैक्स एंड टोबैको पाकिस्तान की सबसे, आई थिंक लिवर ब्रदर्स, लैक्स एंड टोबैको। आपको पता है पाकिस्तान में फॉरेन कंपनीज कौन कौन सी हैं? चेक करें। लिवर ब्रदर्स, लैक्स एंड टोबैको, दीज आर द ओल्डेस्ट फॉरेन कंपनीज इन पाकिस्तान। बड़े बड़े अरसे से वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे उनके बड़े बड़े एसेट्स हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए उन्होंने। जितने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स लैक्स एंड टोबैको ने बनाए हैं, चाहे वो सिगरेट बेचते हैं, और दैट इज अपार्ट फ्रॉम द आर्गुमेंट। जी प्लीज सर, आपका सवाल नहीं पूछा आपसे, एक मिनट में उनसे पूछ लूँ थोड़ा सवाल, प्लीज आप। सर मुझे अभी तक ये कंक्लूड इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म करवाया एक कंपनी के साथ, एक इंटरनेशनल कंपनी थी,
और एक और इंटरनेशनल कंपनी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया। सर आपने इस जो वजह बताई जो मैंने समझा वो ये है कि मतलब हम इलम है, इस वजह से हमने एक उसके हमको कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं था, हमने ख़त्म करवाया। लेकिन मैं सर ये समझता हूँ कि ये बात नहीं है, क्योंकि जो और कंपनी थी वो भी लीडिंग सुपर पावर की थी। आप सही समझते, आप सही समझते। इसमें बड़े इनहेरेंट इंटरेस्ट है ना। देखो एक दफ़ा पैसे कमा लिए किसी ने 10 साल पहले, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज आप नहीं कमाए। नया बंदा आया, नए मिसाइल थे, नए उधर अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि नए बंदे लेके आते हैं, चाइनीज़ हमारे बड़े दोस्त हैं, इनको देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। नए इंटरेस्ट डेवलप हुए, नई स्ट्रेटजी बनी, नए लोग आए, उन्होंने कहा जी कि और नए एम्बिशंस आए। अब आपको पता जो CPAC प्रोजेक्ट है, दैट वाज अ न्यू एम्बिशन, 1993 में तो नहीं था ये। और नए पॉलिटिकल अलायंसेस बने, नए इंटरनेशनल अलायंसेस बने, नई थ्योरियाँ आई। तो इसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट किया, क्यों उनको लाइसेंस नहीं दिया, उसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं। मैं नहीं कहता कि करप्शन है, मैं नहीं कहता, आई विल नेवर अलेज इट। लेकिन जो जिस तरह से उसको किया गया, जिस लापरवाही से किया गया, वो उसमें या नाइली है या करप्शन है। मतलब एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप को दिखाई दे रही होती हैं लेकिन इनविजिबल होती हैं, ठीक है ना। जो कॉन्सिक्वेंसेस से आप अंदाजा लगाते हैं किसी का। जब किसी को थप्पड़ मारें, दर्द नजर तो नहीं आती ना, दर्द तो महसूस होती है। जी बेटा। सर अभी ये प्रोजेक्ट किसी चाइनीज उसके पास है ना, कंपनी के पास? अभी बेटा किसी के पास नहीं है ये। अभी हुआ ये था कि चाइनीज किसी कंपनी के साथ इन्होंने कोई बनाया था। जी 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 जी, इन्होंने उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, MOU टाइप था। तो उस चूँकि अंडर लिटिगेशन था, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप सॉर्ट आउट ना करें पहले टैक्सियान के साथ, तो तब तक तो हम इसको शुरू नहीं करते। तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी, हमारी कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है नहीं। गोरे ने जो यहाँ पे पुल बनाया वो 200 साल तक नहीं गिरेगा, तो हम 2 साल नहीं चला पाते अपना बनाया हुआ पुल। तो उसकी रीज़न क्या है, हम सोचते शॉर्ट टर्म शॉर्ट साइटेड है। तो बेसिकली वो नई पॉलिसी बन गई, नए लोग आ गए, जैसे मैंने पहले कहा, तो उस वजह से मोमेंटम जो है वो सारा चेंज हो गया। तो लीफ ऑफ सॉर्ट करें कोर्ट से, तो उस पे इस केस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप मतलब फ्यूचर जो एग्रीमेंट्स होंगे उसके लिए आप कह रहे हैं कि यानी उसमें बैलेंस रखा जाए। जी बेटा, मेरी कंटेंशन ये है कि इसको भी चेंज करें और प्रेसिडेंट ये सेट करें, गवर्नमेंट को ये कहें कि एक पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट हो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ करे, उसके लिए एक डिफाइंड पॉलिसी हो कि जी इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमने नेगोशिएट करना। क्योंकि अभी तक तो कोई पॉलिसी पाकिस्तान में नहीं। जो करंटली मतलब अभी केस चल रहा है उसमें अभी चेंजिंग हो सकती है एग्रीमेंट? अभी वो प्रपोज्ड एग्रीमेंट है, प्रपोजल है ना। अंदर खाता तो उन्होंने अग्री कर लिया हुआ है, वो नहीं है। लेकिन बेसिकली तो अभी वो प्रपोजल है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, वो प्रपोजल है ना। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इफ यू अप्रूव इट, इफ यू स्टैम्प इट, वी आर गोइंग टू डू इट। This is what they have asked in the reference that is filed by the President of Pakistan. This is what they have asked. सर अगर पाकिस्तान फाइन ना पे करे या जो भी हमारे ऊपर वो लग रही है जो कंपनसेशन है, तो क्या होगा? वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, नई एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो उनके एक लीडर थे, इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दे रखा बड़ा सा। उनकी एक लॉजिक थी कि आयल बम, अल्लाह ताला है आयल बम। आपसे मैं सवाल ले लूं, फिर वो बेटा उधर से हाथ खड़ा कर रहा है। सर वो क्वेश्चन ये था कि जब हम कह रहे हैं कि हमें भी जुडिशियल रिव्यू एटलीस्ट मिलना चाहिए जब एप्लीकेशन, तो हमारी जुडिशरी के पास सर कोई 2 चीज़ों का भुगतान है। एक तो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती और 2 साइड के वकील या 3 साइड भी बात पर खड़े होते हैं, तो वो कई एस्पेक्ट्स मिसिंग कर देते हैं। जजों की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन वो कई एस्पेक्ट्स मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से गलत डिसीजन हो जाता है। एक तो सही रीजन। दूसरी सर ये कि 1239 से वो जो मैग्ना कार्टा था उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था ज्यूरी का, वो पिछले कोई 1000 साल से ज्यूरी पे भी अमल कर रहा है। फ्रांस में भी, मैक्सिको में, यूके में हमारे पास ज्यूरी भी नहीं है, यानी कि डिसीजन एक बंदा नहीं करना होता है। वैसे तो बेंचेस हैं हमारे पास, लार्जेस्ट बेंचेस बन जाते हैं। देखिए है हमारे पास सब कुछ, प्रोसेस प्रोसीजर सब कुछ है। जो आप बात कर रहे हैं टेक्निकल डिटेल्स में जाना, जजेस, देखिए पूरी दुनिया में जजेस ऐसे फैसले करते हैं।
पूरी दुनिया में जजेस सिर्फ लॉ में ग्रेजुएट या ट्रेंड होते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी होती, उन्होंने केमिस्ट्री पैरालल नहीं पढ़ी। देखिए वो तो अभी रिसेंट चीज़ है ना, वो तो है। आप अपनी अब इंटरसेक्शनल लॉयर्स बहुत आगे हैं, आप अपनी इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ लॉ डिग्री कर लें तो बड़े सक्सेसफुल आप करियर बना सकते हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन देखिए इसमें जजेस जो है ना, दे डिफर इन ऑल parts of the world, they defer to experts, और सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं। इसमें भी उन्होंने एक्सपर्ट्स एविडेंस लिए, फॉरेन एक्सपर्ट्स से भी उन्होंने एविडेंस लिया, लोकल एक्सपर्ट्स से उन्होंने, आपको पता है समर मुबारक मालिक को भी कभी कभी बुला लेते थे, बताया मैं कितना तेल है वहाँ पे। तो वो ये देखें, असिस्ट तो लोग करते हैं जुडिशरी को, जुडिशरी हैज ऑल द पावर, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर। आप सर माशाल्लाह बहुत इंटरनेशनल आपकी पब्लिकेशन भी होती है सर, हमारे बहुत सारा, बल्कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं 2-3 लोग मिलकर, ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इसने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को कैसे तबाह किया है। ये जो सर सारे जो टेक्निकल इदारे हैं, मतलब वो आप कह रहे हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेरी माइनिंग तो नहीं सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन माइनिंग इंजीनियरिंग भी हम जाके सब्जेक्ट्स उस डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। देखें आप मैं समझ गया सर, वो जो हमारे जो इदारे हैं ना सर, कई मतलब NHA लेंगे, वो जियो टेक्निकल जियो सर्वे पाकिस्तान लगे, उनके सर जो सारे हेड बैठे हैं वो सेक्रेटरीज लगे हुए हैं। तो जब सेक्रेटरीज हेड लग जाएंगे टेक्निकल फोरम्स के ऊपर जाके, फिर कहाँ से वो अपना क्या कहते हैं एक्सपर्टीज आएंगे। देखें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें हमारी डेफिनेटली इसमें प्रोसेस की, प्रोसीजर की, सिस्टम की एरर्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये छोटे छोटे एरर्स, मेरी नज़र में ये बहुत बड़े मसाइल नहीं, ये ऐसे मसाइल छोटी मोटी ट्वीक से ये सॉल्व हो जाते हैं। आप सही जगह पे सही बंदा लगा दें, मेरिट तो पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है जैसे है, आप सही जगह पे सही बंदा बिठा दें तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा ना यार, तो कम से कम सही बंदा तो बिठा, सफारे से बिठा दें, लेकिन वो बिठाएं जो काम कर सकते। तो ये तो मिसाइल हैं डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक दे आर लाइक जस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट द प्रॉब्लम। जो असल प्रॉब्लम है ना, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, बीइंग एन एकेडमिक, मैं वकील हूँ लेकिन प्राइमरी आई एम एन एकेडमिक, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुश रहता हूँ बच्चों को बातें बता के, क्योंकि ये सवाल बड़े मुसलमाना करते हैं और ऑनेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट बैठा होता तो जो सवाल आपने किए वो ना करता, जो आपने सवाल किए वो ना करते, क्योंकि वो थोड़े समझदार हो जाते हैं ना, आपको पता है समझदार जब बंदा हो जाए तो थोड़ा बुज़दिल भी हो जाता है। तो बेसिकली ये मिसाल ऐसे नहीं है, मुझे लगता है कि ये मसाइल रिलेटेड है हमारी यूनिवर्सिटीज़ से, मुझे लगता है कि ये मसाइल रिलेटेड है क्योंकि रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का काम है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर फैक्ट्रीज, नर्सरीज टू प्रोड्यूस रिसर्चर्स, प्रोड्यूस पीपल हु मेक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, वट एवर डिग्री दे आर स्टडिंग। तो उसमें आप कह रहे हैं जी कि माइनिंग भी है, माइनिंग की एक्सपर्टीज़ भी है, तो उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। अब जो JVA आप पढ़े ना, जो अभी इन्होंने JVA साइन किया, उसमें एक प्रोविजन आपको नहीं मिलेगी कि आपने लोकल इंजीनियर्स को ट्रेन करना, दिखा दें। मैंने वैसे रिसर्च नहीं की उसके ऊपर, लेकिन मेरा ये बड़ा इन्फॉर्म है। 1970s में सर हमने 70s के आगाज में ही हमने एक कनाडा से पावर प्लांट लिया जिसको कैनफ कहते हैं, कराची न्यूक्लियर, जी मैं जानता हूँ, कैनेडियन न्यूक्लियर ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर जी सर, वो 125 मेगावाट जी सर, उसकी अगले 10 साल जैसे अभी T1 T2 या जो नए पावर प्लांट कराची में K2 बन रहा है, उसकी जैसे 10 साल या 15 साल हमें सप्लाई देनी है फ्यूल पैलेट्स की चाइना में, वो कनाडा ने देनी है, और उस वक्त हम इतने ट्रेंड भी नहीं थे। साथ उसी वक्त 1972 या 3 में उसमें धमाके कर दिए इंडिया ने, पाकिस्तान ने कर दिए तो सर इंडिया ने कर दिए तो पाकिस्तान ने भी जवाब देना था, और वो जो फ्यूल था उससे प्लूटोनियम भी बन सकती थी। मैं आपको आई थिंक आई गेट द पॉइंट सर, वो कनाडा ने बंद कर दिए जी, लेकिन आपने खुद बना लिया, हमने खुद बना लिया। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप मुझे ये बताएं, ये लोग क्या नहीं कर सकते, ये जो इधर आपके पीछे बैठा, मैं और आप तो चलो थोड़े से पुराने हैं, हम हो सकता है कुछ ना भी कर पाए, ये लोग ये जो बैठे हुए पीछे ये क्या नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा काम है जिसका आप इरादा कर रहे हैं आप नहीं कर सकते? लीडरशिप की जरूरत है, इसके लिए लीडरशिप की भी जरूरत है, पढ़ाई नहीं कर सकते। देखिए बड़ा भी होगा, लेकिन गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं, गवर्नेंस के इश्यूज तो डेफिनेटली हैं। बेटा आपके पीछे कुछ सवाल है, प्लीज जरूर पूछिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन पास की कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है कंपनी के साथ, तो
तो ये नल एंड वाइड है, ठीक है। तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए, वहाँ से कंपनी, तो हम भी पीछे चले गए ना उसके, तो वहाँ से जाके हमें कंपनसेशन उनको देना पड़ा, पनिशमेंट हुई हमें, लेकिन हमने वो नहीं दिए, हमारी वहाँ क्रेडिबिलिटी लूज हो गई। तो हम किस क्रेडिट के साथ ये मतलब दोबारा इस चीज़ को दोहराना चाह रहे हैं, आप जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल कर रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी तो हमारी रही नहीं है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी जिसकी ना हो तो उसकी तो बात नहीं सुनी जाती, तो जो उन्होंने प्रपोजल दिया वो तो एक्सेप्ट करना पड़ना है, आपको हर किसी को करना पड़ना है। तो आप फिर उनके खिलाफ केस नहीं करते जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन के मुताबिक इन्होंने करते हैं, जिनकी वजह से ये नल एंड वाइड हुआ है। सारे काम मुझे से करवा